हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, नेम द फॉलोइंग, ये सबका आपको नाम बताना है। ठीक है, ए ब्लैक टाउनशिप इन साउथ अफ्रीका, तो क्या कहेंगे इसे? सोवेटो। ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, तो इसे कहेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो इसे कहेंगे हम अपार्थेड। अपार्थेड, ठीक है। और है 4 नंबर में द रिवर विच इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इसे कहेंगे हम कॉवरी। ठीक है, इसे बना लेंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। साउथ अफ्रीकन पीपल आर divided into white, black, Indian and colored races. ठीक है, it is true that democracy allows people to participate. The key elements of a democratic government are equality and justice. Law is equal for all. State whether true or false. Under apartheid law, races were allowed to mingle with each other and to use all facilities. False. F लिखेंगे। Representatives keep in mind the voices and interests of the people. True. Religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. True. The basic rules and laws that have to be followed in India is laid down by the Indian Constitution. True. ठीक है, उसके बाद है give reasons. There were separate hospitals, ambulances, etc. for the blacks. The blacks were not allowed to use common facilities. South Africa is a country of many races. In earlier times, there were many color of people like black, white, Indians. People make the decisions in a democracy. In democracy, people can choose their cadre leaders by their own. ठीक है, equality and justice are inseparable. If there is no equality, then the system that give justice cannot function freely and fairly. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है कि हु टेक्स डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, इसका होगा ए नंबर, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक लगाएंगे। फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन द इंडियन गवर्नमेंट इलेक्टेड? 5। ठीक है, विच इज़ द most important institutions that resolves conflicts? Government। टिक लगाएंगे। The Afrikaans language in South Africa was spoken by which group of people? Whites. Match the following. List 1 and list 2. Name and closely related words. Zulu, तो Zulu का होगा 4 नंबर। ठीक है, लैंग्वेज स्पोकन बाय नेटिव साउथ अफ्रीकन।
B. African National Congress. 1 number, the group that lead the struggle against apartheid. C number, Krishna Raja Sagara Dam का इन कर्नाटका. ठीक है. इंडियंस का लेबरर्स एंड ट्रेडर्स इन साउथ अफ्रीका. ठीक है. मैटर डैम तमिलनाडु. ठीक है. तो ये सब आपको याद करना है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट वेयर द अनटचेबल deprived of? Denied access to temples and to village well. What is the main aim of electing representative in a government? So that the people can tell their problems to the government. How does the power of government gets restricted? The power of the government get restricted by regular elections. Why are fees for girls lowered in many schools and colleges, so that girls can also become educated? Short answer type questions. What are the various ways through which unjust and unfair means of government and institutions can be highlighted by the people? Touch forcing them and by protesting. Define social movements. How did they come into action? Name a few groups associated with these movements. A large group of people organized to protest or resist social change. Few groups are minority and women. How do people participate in the government's working? Give example. By voting in the elections and by taking an interest in the working of the government and by criticizing them when required. Why are laws important? It acts as a guidelines as to what is accepted in society. Why are rivers sometimes considered a source of conflict between states? A conflict arises between states because of both dams on the same river. ठीक है. उसके बाद है कि what are the uses of river water stored in Krishna Raja Sagara Dam in Karnataka and Metter Dam in Tamil Nadu? Irrigating several districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru. ठीक है. Long answer type questions. Who was Nelson Mandela? How did the contribute in making South Africa a democratic country? Nelson Mandela was an African leader who fought the apartheid system for several years and even went to prison for 27 years. ठीक है. What is the role of government in eradicating untouchability and discrimination from society? Give examples. Article 17 imposed by government says that no one can restrict the Dalits from entering temples, street, buses, etc. How do conflicts occurs in society? What is the role of government in resolving these conflicts? A conflict arises when there is a clash of interest. In such a case, the government steps in
in any of its various form, courts, panchayat, police, etc. उसके बाद है कि जस्टिस कैन बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. Who made this statement and why? Justify this statement by giving an example from your real life experiences. Dr. B.R. Ambedkar made this statement so that every class of the society can attain justice. What is the Cowrie dispute? How can this problem be overcome? The Cowrie dispute was fought between the Tamil Nadu and Karnataka over the allocation of water from the river Kaveri. The solution was to build a dam at Kaveri river. Map based questions. ठीक है, अब ये है मैप बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मैप को देख के आपको इसे बनाना है. जैसे कि क्या है इसमें कि ऑन द गिवन वर्ल्ड मैप मार्क द फॉलोइंग. अब देखिए इसमें आपको मार्क करना है, जैसे कि इंडिया कहाँ है और साउथ अफ्रीका कहाँ पर है. ठीक है, तो इस मैप में आपको मार्क करना है, तो आप ढूंढ के बताइए कि कहाँ पर है इंडिया और कहाँ पर है साउथ अफ्रीका. तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो.